Make it little bit lower. Little bit more lower. Right. Okay, finish the one. Ready? Yes, I'm ready. Hare Krishna? Hare Krishna! I couldn't hear that. Hare Krishna! Good. Nice to see so many devotees. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे भक्तों को एक साथ देखकर. And even several of the devotees here are wearing tila. और मुझे देख के और प्रसन्नता हो रही है कि बहुत सारे अधिकांश भक्त तिलक करके आए हैं. These days in Iskcon, a lot of people think it's old-fashioned or fanatical. It's fanatical. कोई आजकल इस्कॉन में भी काफी जो भक्त है ना वो समझते हैं ये जो तिलक ऐसे पहन के जाना ये तो एक केवल मात्र एक क्रिया है ऐसे इसका कोई विशेषता नहीं है. Tilak is very, very important. Srila Prabhupada put a lot of emphasis on it. और ये जो तिलक करना ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और श्रील प्रभुपाद जी ने इस चीज के ऊपर बहुत जोर दिया है. Vaishnavas wear tilak. जो वैष्णव है वो हमेशा तिलक धारण करके रखता है. And it's supposed to look like tilak. और तिलक जब भी आप डालें तो तिलक जैसे ही लगना चाहिए. Which means 2 lines on the forehead and a leaf on the nose. जैसे 2 रेखा आपका ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पत्ते के समान ये आपका तुलसी का ये रहेगा. Not just a little mess between your eyebrows. ऐसा नहीं है कि दो आपने जो विभूति के बीच में कुछ ना कुछ आपने डाल दिया बस वो आपका तिलक हो गया. You see that the Yamadutas are the servants of Lord Yamaraj. जैसे आप जानते हैं जो यमदूत है वो यमराज जी के सेवक है. He was the Lord of Death. उसको मृत्यु की देवता माना जाता है. He's also called the Lord of Religious Principles. और उनको ये भी माना जाता है कि वो धर्म का सिद्धांतों का रक्षा करें. And the job of the Yamadutas is to take the rascals out of their bodies and put them in another body. और ये यमदूत का कार्य क्या रहता है कि जो धूर्त व्यक्ति है जो धर्म का पालन नहीं करता है उनके आत्मा को शरीर से लेकर उसको दूसरे शरीर में डाला दिया जाता है. But they've been instructed that they cannot take anybody who's wearing tilak. पर उनको ऐसे विशेष निर्देशन दिया गया है कि जो व्यक्ति के कपाल पर तिलक है उनको आप स्पर्श न करें. It's a very easy way to save yourself. कितना आसान तरीका है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं. श्रील प्रभुपाद की जय. And it's also inspiring to other devotees to see someone's face with tilak. और इससे दूसरे जो भक्त हैं उनको भी प्रेरणा प्राप्त होता है कि दूसरे के कपाल पर तिलक देखते. One other point of etiquette और एक और विषय है शिष्टाचार के is that I noticed when you were raising your hands, some of you raise your hands like this, and some of you raise your hands like this. और मैंने एक चीज गौर किया है जब भी आप हाथ ऊपर कर रहे थे ऐसे कितने जन को हाथ ऐसे कर रख रहे थे दोनों हाथ ऐसे और कोई किस तरह से रख रहे थे. But Srila Prabhupada showed by his own example how to raise the hands. श्रील प्रभुपाद जी अपने स्वयं उसको फॉलो करके एग्जांपल सेट किए कि किस तरह से हाथ को आपको रखना चाहिए ऊंचा करके. I don't think you'll ever find a photo or a video of Srila Prabhupada with his hands like this. आपको कोई भी श्रील प्रभुपाद जी के चित्र या चलचित्र आपको अगर ऐसा प्राप्त नहीं होगा जिसमें श्रील प्रभुपाद जी हाथ इस तरह से उठाए हुए हैं. दोनों हाथ. His hands are always like this. उनका हाथ हमेशा श्रील प्रभुपाद जी का ऐसे रहता है. A little bit open, facing each other, and also a little bit up. ऐसे दो हाथ एकदम खुले हैं और ऊपर की तरफ ये किया हुआ है. When I joined Iskcon,
I asked the devotees why they hold their hands like this. महाराज जी बताते हैं कि जब भी वो इस्कॉन ज्वाइन किए तब उन्होंने दूसरे भक्तों को पूछा कि ऐसे भक्त लोग ऐसे हाथ ऊपर क्यों करते हैं। And they said, because it's a sign of openness. बोले कि ये एक खुलापन का ये है, क्रिया है It's a sign of surrender. और ये एक लक्षण है शरणागति की। You're open for the mercy. आपके खुल के आप मांग कर रहे हैं I'm ready. More mercy. बोले कि मुझे और कृपा चाहिए, और कृपा चाहिए। So when they told me that, it made perfect sense to me. और जब भी उनको महाराज जी को जब भी दूसरे भक्तों ने इस प्रकार का कारण बताया, बोला बहुत उनको वैलिड ये लगा, सही चीज लगा। Also, every set of Gaurnitai deities, or every painting of Gaurnitai that was commissioned by Srila Prabhupada, they're all like this. आप श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो उनके निर्देशन में चित्र बने हैं या उनके निर्देशन में जो भी विग्रह आप इस्कॉन में देखते हैं, तो सबका हाथ का जो मुद्रा है इस तरह का आपको प्राप्त होगा। And Prabhupada instructed the devotees. I know of at least 2 occasions when he instructed the devotees, this is how you hold your hands. और महाराज जी बताते हैं, मेरे को तो 2 ऐसे बार याद है कि श्रील प्रभुपाद जी ने विशेष करके कहा कि आपको हाथ इस तरह से रखना है। Now some devotees think this isn't very important. और कई भक्तों को ऐसा लगता है ये इतना विशेष नहीं, इस चीज को सब ध्यान दें। One devotee called it peripheral. You know what peripheral means? It's a peripheral topic. It's not a main topic. It's something on the edge. हाँ, तो काफी जन को ऐसा लगता है कि ये जो विषय है इतना गंभीर नहीं है। So if it's not very important, it should be easy for you to do. बोले कि अगर ये इतना कठिन नहीं है तो ये आपके लिए सरल होना चाहिए इसको करने के लिए। Everything has meaning. Everything has significance. बोला हर चीज का महत्व है, हम जो भी चीज करते हैं। What's going on over there? They're listening. Well, they're talking. How can they listen? They're talking. Can I just tell them that don't make any noise, don't talk to each other? Good idea. हरे कृष्णा। महाराज जी पॉजिटिव है, तो महाराज जी ने निर्देशन दिया है कोई भी भक्त एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, विशेष करके किचन की तरफ जो सेवा कर रहे भक्त, ऐसा नहीं कि महाराज के नजरों में नहीं हुआ, महाराज जी हर जगह दृष्टि पर रहता है। तो और कोई भी जप नहीं करे, और जब आप लेक्चर सुन रहे हो तो आप लेक्चर का श्रवण करें। महाराज जी इस पर विशेष ध्यान देते हैं। हरे कृष्ण। If you're talking, then you can't hear. अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका श्रवण नहीं कर पाओगे। So you can talk all the rest of the day. बोले कि पूरा दिन पड़ा हुआ है आपके लिए चर्चा करने के लिए। And people do talk all day long. और ऐसे आपको लोग भी प्राप्त हो जाते जो पूरा दिन बात करते रहते। Everybody likes to talk. मतलब हर कोई, सबको अच्छा लगता है बात करना है। Even if they have nothing to say, they like to talk. तब भी जब भी उनके पास कोई विषय भी नहीं रहता है चर्चा के। There's a saying that a fool is not known until he opens his mouth. ऐसे कहा जाता है कि मूर्ख का परिचय नहीं होता जब तक वो बोलता नहीं है, बोलता है तो उसका परिचय हो जाता है, नहीं तो मूर्ख है। And sometimes you see 2 people having a conversation with each other. कभी-कभी हम देखते हैं कि 2 व्यक्ति के बीच में वार्तालाप होता है। And they're both talking at the same time. और जब वार्तालाप होता है ना, दोनों को अपनी बात रखना रहता है, तो दोनों एक साथ बोलते रहते हैं। Nobody's listening. They're both talking. तो मतलब दोनों बोलते रहते पर एक दूसरे का भी नहीं सुनते। Then afterwards you ask one of the people, so how was your conversation with so and so? तो बोले कि आप अगर वो 2 व्यक्ति को पूछे कैसा हुआ आप लोग का वार्तालाप, क्या चर्चा हुआ, ऐसे बोले नहीं, जो बोलना ना बोल दिया। Oh, it was very nice, very good conversation. बोले नहीं, बहुत अच्छा चर्चा हुआ। Because I was talking the whole time. कुछ मैं तो खाली मैं ही बोलते रहा। So we have to develop the skill of hearing. तो बोले कि हमको ये जो कला है ना, ये हमारे अंदर ये डेवलप करना पड़ेगा कि किस तरह से श्रवण करना चाहिए। Paying attention and paying attention to the right things. हाँ, हमें ध्यान देना सीखना चाहिए और ध्यान भी सही चीज पे ध्यान लगाना सीखना चाहिए। When somebody's talking about
politics or who won the football game, then everybody's so yeah. मतलब कि अगर लोगों के बीच में जब भी राजनीतिक विषय आ जाता है या कि फुटबॉल में अभी कौन कैसा खेल रहा है या ऐसे तो हमारे कान कैसे खड़े हो जाते हैं All kinds of mundane things people are really interested in. मतलब जितने प्रकार के भौतिक चीज है हमारी स्वाभाविक उसमें रुचि रहती है But if there's Krishna Katha, nobody's interested. और जैसे ही कृष्ण कथा के विषय में कोई चर्चा करो बोला नहीं हमारी रुचि Oh, I'm sorry, I'm busy, I have to go. बोले नहीं मैं बहुत बिजी हूँ मेरे पास समय नहीं है This is our disease. बोले ये देखा जाए तो ये हमारी एक बीमारी है When Raghunath Das Goswami went to surrender to Lord Chaitanya, रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए उनके शरण लेने के लिए he asked Lord Chaitanya, so what is my duty now? तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु पूछे अब मेरा क्या कर्तव्य रहेगा And Lord Chaitanya told him a few things. और चैतन्य महाप्रभु उनको कुछ विशेष करके कुछ कहे In particular, और विशेषता कुछ he told him, Ramya Katha Nashunibe, उन्होंने कहा Ramya Varta Nakahibe. उन्होंने कहा कि ग्राम्य कथा ना सुनी में और न Ramya Katha Nashunibe, ग्राम्य कथा ना सुनी में मतलब कि Ramya Varta Nakahibe. ना ग्राम्य वार्ता ना कोई भी Do we have any Bengalis here? महाराज You Bengali? Okay. So I apologize for my Bengali pronunciation. नो महाराज इट वाज मोर देन परफेक्ट Ramya Katha Nashunibe, Ramya Varta Nakahibe. So, it's probably very similar in Hindi, right? Ramya Katha. Ramya means village. जो ग्राम का अर्थ है कि गांव And Ramya Katha means village talk, और गांव में कथा का अर्थ है मतलब कि यहाँ की वहाँ की दुनियादारी की बात talking all mundane things मतलब जितने प्रकार की बहुत विषय है सब चर्चा करते हैं about politics, about the family, about football. मतलब कि पूरा राजनीति के विषय में अपने पारिवारिक विषय में और यहाँ वहाँ की जो क्रीड़ा चलती है फुटबॉल क्रिकेट ये सब विषय में Cricket. Cricket is probably the stupidest game I've ever seen. महाराज जी बताते क्रिकेट तो मैंने देखा सबसे बकवास खेल है ये I just don't understand it at all. मैं मुझे समझ में नहीं आता क्रिकेट खेलते कैसे I'm not sure which is more stupid, cricket or golf. बोले मुझे पता नहीं कि कौन सा ज्यादा बकवास है क्रिकेट या गोल्फ और आपने देखा होगा But anyway, people come together, and this is normally the kind of things they talk about. और तो विशेष हम ये कह रहे हैं कि लोग जब भी एक साथ मिलते हैं तो यही सब विषय के ऊपर चर्चा करते हैं Things that have to do with this temporary world and your temporary position in this world. तो मतलब ये सब चीज क्या है ये सब चीज क्षणभंगुर है जो स्थायी नहीं है और उसके ऊपर हम ये सब चीज का चर्चा करते हैं Shurpavyadini Rajendra निर्नाम शांति Vinansanti Sahasrashaha Apashitama Patakvan Viheshabrihamedina. That most people have Shurpavyadini Rajendra and Vinansanti Sahasrashaha. They have hundreds and thousands of things to talk about that have nothing to do with their real benefit. तो उन्हें लोगों के पास हजारों विषय है चर्चा करने के लिए पर वो सब विषय उनके आत्महित के लिए कुछ भी नहीं रहता है Shurpavyadini Rajendra Vinansanti Sahasrashaha. Hundreds of thousands of things. हजारों विषय रहते हैं उनके पास चर्चा करने के लिए Apashyatam Atmatatvam. And in this way they remain blind to the absolute truth. और इस प्रकार वो जो सही असल सत्य है उसके प्रति वो अंधे बने रहते हैं And they live their lives just like the animals. और वो अपना जीवन यापन क्या करते हैं एक पशु के समान What's the difference? What's the difference between what the human beings are doing and the animals are doing? बोले कि क्या फर्क रह जाता है एक पशु और एक इंसान में क्या फर्क रह जाता है Human beings, materialistic human beings are called Dvipada Pashu.
जो बोलते हैं कि जो मनुष्य है उसको दो पैरों वाला पशु कहा जाता है। It's easy to figure out what that means, right? Dvipada Pashu. It means two-legged animals. और इसका मतलब है कि दो पैरों वाला जानवर। Ahara Nedra Vayamaitunamcha. There's four items that are shared between the animals and the human beings. Four activities. ऐसे चार जो क्रिया है जो सामान्यतः आपको पशु में भी दिख जाता है और मानव में समाज में भी दिख जाता है। Ahara means eating. आहार मतलब भोजन करना। Nedra means sleeping. निद्रा अर्थात सोना। Bhaya means fearing or fighting. और भय का अर्थ है कि अपना संरक्षण करना या लड़ना। And Maitunancha means sex. और मैथुन का अर्थ है मैथुन। Ahara Nedra Vayamaitunancha Samanya Meta Prashabhi Maramaha. Dharmo Hiteshan Adiko Vishesho. But the human being has one other quality that the animals don't have. और जो मानव समाज है मनुष्य है उनके पास एक विशेष गुण है जो गुण वो पशु में नहीं पाया जाता है। That is dharma or religion. और वो एक गुण क्या है? वो धर्म है। धर्म को समझना। Dharmo Viteshan Adiko Vishesho. It's one special quality that the animals do not have. धर्मो ही देखा अधिको विशेषो मतलब एक चीज हमें अधिक चीज प्राप्त हुआ है। अगर वो चीज नहीं करते तो हम भी पशु के समान हैं। Samanya Meta Pashabhi Samanaha. And if he doesn't engage in religious activity, then he's just the same as an animal. धर्म में ना बिना पशु भी अगर धर्म में उसके अंदर हानि हो गई उसके अंदर धर्म नहीं है कि तो वो पशु के समान है। And religion the word religion or the word dharma means, well, in English the word religion means the laws of God. तो इंग्लिश में अगर धर्म की अगर परिभाषा देखें तो भगवान के द्वारा निर्धारित नियम। It's coming from God. जो नियम भगवान से आता है। The absolute God is the absolute truth, and the absolute truth is coming from Him. और भगवान ही परम सत्य है और परम सत्य भी उनसे ही आता है। Now, let's say probably most of you come from families of demigod worshippers, right? और चलो मैं ये मान लेता हूँ ऐसे कि आप में से अधिकांश जो जितने श्रोतागण हैं ये देवी देवताओं के आराधना करने उपासना करने वाले परिवार में से आए हैं। Now, in one sense, that's okay, because at least the demigod worshippers, at least they're going to someone for something. बोले एक दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा है कि ये जो भगवान के बनाया हुआ जो नियम है देवी देवता उनके पास जाते हैं जो भी उनका जो भी मांगे रहती है मांगे को पूरा करने के लिए जाते हैं। At least they're respecting somebody. तो ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति को तो सम्मान कर रहे हैं। But as Krishna explains in the 7th chapter of Bhagavad Gita, तो भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में भगवद गीता में समझाते हैं whatever benefits people get from the demigods, they're actually coming from Krishna. भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी चीज आपको देवी देवताओं से भी प्राप्त होता है उनको भी भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त होता है। The demigods have no potency without Krishna. ऐसे जो देवी देवता है स्वतंत्र रूप में उनका कोई सामर्थ्य नहीं है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। So why waste time and energy worshiping the demigods? तो ऐसा अपना समय और अपना ये सब चीज क्यों बर्बाद करना है देवी देवता को उपासना। It's sort of pious. It's sort of pious. You know what pious means? Yes, pious, yes. It's sort of religious. तो ये एक दृष्टिकोण से देखें तो ये पुण्य का कार्य है। Like in the neighborhood where I have my ashram, तो जहाँ महाराज जी ठहरे हुए हैं आश्रम में, we just got very first-hand experience of Navaratri. तो जहाँ महाराज जी ठहरे हुए थे तो महाराज जी को प्रथम अनुभव हुआ देवी देवता का उपासना जब वो उन्होंने नवरात्रि के समय पर उन्होंने वो सब देखा चीज। Absolute torture. बोले
बोले कि एक काइंड ऑफ मतलब एक तरीके से सबके ऊपर टॉर्चर करते हैं। Unbelievable. बोले कि कल्पना के बाहर है ये। Everybody gets so loud and so excited. बोले कि धर्म का कार्य करते पर सबके अंदर ऐसे उत्साह और इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, नाचते हैं ऐसे। For what? Because Durga is supposed to give you material benefits. बोले कि आपको ऐसा लगता है हाँ ये दुर्गा जी से प्रसन्न होगा और हमें भौतिक चीज प्रदान करेंगे। That's what every materialist wants. He wants material benefits. और हर कोई भौतिक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं इनका उपासना करूंगा, मुझसे इससे भौतिक कोई लाभ प्राप्त होगा। When Srila Prabhupada was touring somewhere with his disciples, somewhere in India, एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे भारत में एक जगह गए and they came to a temple of Durga. और घूमते घूमते वो एक जगह आए और दुर्गा जी का मंदिर था वो। And Srila Prabhupada stopped in to offer respects to Durga. और श्रील प्रभुपाद जी वहाँ रुके और वहाँ जाके दुर्गा देवी को अपना प्रणाम किए। Because Durga is Krishna's servant. क्योंकि जो दुर्गा जी है वो भगवान की सेविका है। So Srila Prabhupada said that worshipping demigods in relationship with Krishna is good. This is fine. तो बोले कि हम जब भी देवी देवता का उपासना करते हैं भगवान के श्री कृष्ण के साथ उनके संबंध को जानकर तो ये बहुत अच्छी बात है। But he said that worshipping demigods in the mood of this is the way Prabhupada said it. तो बोले कि अगर उपासना भी करना है देवी देवता का तो ये हमारा भाव रहना चाहिए। Give me this, give me that. ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। That's what their worship is about. Give me this, give me that. तो यहाँ जनसाधारण में इस तरह से लोग उपासना करते हैं देवी देवता की। Devotees of Krishna are asking Krishna, please give me pure devotional service. तो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो शुद्ध भक्ति है मुझे प्रदान कीजिए। And please get me out of this samsara, this cycle of birth and death. और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस संसार से मुक्ति दीजिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। Vaishnavas, worshippers of Krishna, they aren't asking for material benefits. जो वैष्णव रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो भौतिक चीज की कोई प्रार्थना नहीं करते भगवान से। But even if you want material benefits, अगर आपको भौतिक चीज की अगर आवश्यकता है, still you should go to Krishna. फिर भी आपको भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाना है। Akama sarvakamo va mokshakama udaradihi tivrena bhakti yogena yajeta purusaramaro. Akama means somebody who has no desires. तो महाराज जी श्लोक बताया काम सर्व काम। तो बोले कि अकाम का अर्थ ये है जिसका कोई कामना नहीं है, जिसका कोई इच्छा नहीं है। That's completely pure devotee. वो पूर्ण तरीके से एक शुद्ध भक्त है। Sarvakama means somebody who has all desires, और अकामा के विपरीत सर्व कामा का अर्थ है जिसके पास बहुत सारी कामना है। which is most people. और सर्व काम की मतलब उस श्रेणी में हम सब आते हैं, बहुत कामना है। Mokshakama means somebody who desires liberation. और मोक्ष कामा कोई चाहता है कि संसार से मुक्ति प्राप्त करे। So whether you have no desires मतलब हो सकता है कि आपका कोई भी इच्छा नहीं हो भौतिक, or you have all desires, हो सकता है दूसरा चीज है कि आपकी बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी इच्छा है, or you desire liberation, और तीसरी चीज है कि आप मुक्ति पाना चाहते हो संसार से। tivrena bhakti yogena. Still you should worship Krishna. You should engage in bhakti yoga intensely. और अगर ये तीनों में से भी अगर आप कोई है फिर भी ये भगवान की भक्ति को गंभीरता से रहना चाहिए। Vijayata Purusampara, and then you go to the supreme destination. और इसी तरह से आप परम गंतव्य को भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। We should worship Krishna with great intensity. हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, बहुत ही गंभीरता से करना चाहिए। Like when you chant your japa, जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, japa. हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, If it's just casual, अगर वो खाली एक मात्र कितने तरीके से हम अगर करें, I gotta chant my vows. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna.
या अगर वो से केवल मात्र करना है इसलिए आप उस चीज को कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोल। If you approach Krishna casually, he may reciprocate casually. आप इसको अगर इस तरह से साधारण तरीके से लेंगे आप इसको, तो भगवान श्री कृष्ण भी आपको ऐसे हल्के में लेंगे। We want Krishna's attention. हम जब करते हैं हमारा उद्देश्य हम भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण अपने तरफ ले। Prabhupada said, like the baby crying for the mother. शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जैसे एक जो छोटा शिशु है वो रो रो के माँ का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। Now, I don't know much about babies, thank God. भगवान बोले कि महाराज जी बताए भगवान की कृपा से मुझे बच्चों का ये सब अनुभव मेरे को कभी हुआ नहीं। But I've never heard a baby cry casually. और मैंने देखा है कि जब भी कोई बच्चा रोता है वो ऐसे साधारण ऐसे रोता नहीं है, वो गंभीर होके ही वो रोता है ऐसे। Mothers, you can tell me if I'm right or wrong. बोले आप माता लोग बोल सकते हैं कि जब बच्चे रोते हैं वो कैसे गंभीर तरह से रोते हैं। The baby doesn't go. If the baby wants the mother's attention, अगर जो बच्चा है उसको अगर अपने माँ का अगर ध्यान अपने तरफ करना है, he doesn't just go. वो खाली ऐसे साधारण तरह से माँ ऐसा नहीं करता है। You can. Baby's just a tiny thing, and you can hear him like 50 kilometers away. And whatever the mother's doing, she drops. She just stops. और इस तरह से बच्चे रोते हैं ना, माता जो भी चीज करती है उसको बस साइड में रखना पड़ता है, उनको अटेंड करना पड़ता है। Like maybe even she's engaged in some intimate activity with her husband. और हो सकता है कि जो पति पत्नी है वो आपस में कोई बात करे गंभीर विषय में। But when she hears the baby cry, पर जब भी लगता है कि बच्चे रो रहे हैं ऐसे, oops, sorry, later, and she goes to the baby. फिर वो अपने पति को छोड़ के वो बोले नहीं, बच्चों को अटेंड करना पड़ेगा। And therefore, there's a phenomenon that sometimes the father becomes envious of the baby. ऐसे कहावत है ऐसे कि बोलते हैं कि कभी-कभी ऐसा है जो पति है वो बच्चे से ईर्ष्या करने लग जाता है कि मेरी पत्नी का पूरा बच्चे के प्रति आकर्षण रहता है। Because before the baby came, her attention was on him. बोले कि बच्चे होने से पहले बोला कि सारा ध्यान मेरा रखती थी, अभी पूरा बच्चे ने वो ले लिया। The baby comes, and the baby takes top importance. और जैसे ही बच्चा आता है, बच्चा सीधा टॉप सीट ले लेता है, सब ध्यान अपने तरफ खींच लेता है। The baby, from what I've heard, can't do anything by himself. तो बच्चा है ना वो अपने से स्वयं से कुछ चीज कर नहीं सकता है। He can't feed himself. He can't drink water. मतलब वो ना अपने आप का भोजन खा सकता है, ना अपने आप से पानी पी सकता है। I've heard that the baby can't even turn over by himself. और शुरुआती समय में तो जो बच्चा है वो अपने आप को पलट ही नहीं पाता है स्वयं से। So for him, the mother is like God. और उनके लिए तो जो माँ है वो एक बड़ी देवी के समान है। Whatever he wants, he has to get from the mother. और जो भी चीज उसको चाहिए, जिधर भी जाना हो उसके लिए माँ चाहिए। He's totally dependent. वो पूरी तरह से निर्भर है माँ के ऊपर। He doesn't have a job. मतलब कि उसके पास और दूसरा कोई काम नहीं। He doesn't have money. उसके पास कोई धन नहीं है उसके पास। Just depends on mother. वो कुछ सब कुछ जो अपने माँ के ऊपर निर्भर है। So a Vaishnava should be like that with Krishna. और महाराज जी सब चीजें समझा रहे हैं कि हमारा जो वैष्णव है ये हमें ऐसे भाव को लेना We should feel totally dependent on Krishna. और हमको पूर्ण तरह से भगवान के ऊपर इस प्रकार में निर्भर रहना चाहिए। And therefore, we should chant, just like the baby crying for the mother, we should chant with great intensity. तो हम जब भी जब करते हैं तो इसी भाव से हमें बहुत ही गंभीरता से हमारे जब को जब करना चाहिए। Like probably many of you know the story of a Jamil. Who knows the story of a Jamil? तो आप में से कितने जन को अजामिल की कहानी पता है? Yes, okay. So, we understand that a Jamil was saved because he called out the name of Narayan.
तो हम जानते हैं कि लीला से माध्यम से कि जब भी अजामिल ने भगवान श्री नारायण का नाम लिया और उनका बचाव में He wasn't even crying out for the supreme Narayan. He was crying out for his son named Narayan. तो वो चिल्लाकर जो नारायण नाम पुकारे भी है वो परम पुरुषोत्तम नारायण के लिए नहीं बोला, वो तो अपने बच्चे नारायण के लिए पुकार लगाए थे। But that's not the only reason he was saved. पर यही कारण से वो बचे नहीं है। The Bhagavatam explains, what's the word the Bhagavatam uses? Do you remember? How he, the way he chanted? Help us. What? Help us, no, or something else. What's something like intensity. Anxiety, that's the word in the Bhagavatam, anxiety. He was crying out with great anxiety. और जब भी एक बता रहे हैं कि भागवतम में ऐसे वर्णन है कि जब वो नारायण का नाम पुकारे तो उनका भाव कैसे था, उनके अंदर तीव्र था, इंटेंसिटी था, और दूसरे अंदर वो जो एंजाइटी जिससे वो एकदम परेशान है और उनकी कोई असहायक है, उस भाव से उन्होंने उनको। So it wasn't just that he called out the name of Narayan, it was the mood with which he called out the name of Narayan. तो उसमें नारायण का केवल मात्र नारायण का नहीं नाम नहीं था, नारायण के नाम के साथ उनका जो भाव था, भगवान नारायण को पुकारने का जो भाव था वो उसके अंदर सम्मिलित था। Sometimes devotees are concerned, what do I do when I have some difficulty in life? तो कभी-कभी भक्त महाराज जी से पूछते हैं कि कभी जीवन में समस्या आती है तो हमें क्या करना चाहिए? But your mistake is to think that there is any time that you don't have difficulty. बोले कि मतलब समस्या ये है कि ऐसा कौन सा समय है कि आपको समस्या नहीं रहती है? You always have difficulty. बोले कि आपको हमेशा कोई ना कोई समस्या रहती है। Material life is difficult. बोले कि भौतिक जीवन ही बहुत कठिन है। And therefore, if we're thinking like that, then we always chant with intensity. और जैसे अगर ये चीज को हम अपने असामर्थ्य और हमारे परेशानी को ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही तीव्रता से हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। Srila Prabhupada said, when you chant the Hare Krishna Mahamantra, it's like saying, "Dear Lord, please engage me in your transcendental loving service." तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, हम जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो प्रेममयी जो सेवा है उसमें मुझे लगाइए। Because if you don't engage me in your transcendental loving service, then I'll be engaged in the service of Maya. बोले कि ऐसे भाव से प्रार्थना करता है कि आपके दिव्य प्रेमा भक्ति में सेवा में अगर मैं नियुक्त नहीं होगा तो मैं फिर माया के सेवा में लग जाऊंगा। So we should always feel like that. We should feel desperate. तो हमारे अंदर वैसे भाव होना चाहिए, वैसी आतुरता हमारे अंदर होना चाहिए। Without Krishna, I have nothing. बोले कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा और दूसरा कोई नहीं। Whatever you think you have, it can be taken away from you at any moment. आपके पास जो भी चीज है जिसका आप आश्रय लेके पकड़े हो, कुछ क्षण में ही वो आपसे कभी भी छीन सकता है। Your money, your health, whatever, boom, just gone in a moment. वो आपके पास धन हो, अच्छा शरीर हो, जो भी चीज हो, कुछ क्षण में वो सब चीज चला जा सकता है। Anything can happen to anybody, anywhere, at any time. तो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी समय कुछ भी चीज हो सकता है। That's our situation in the material world. बोले ऐसी हमारी जो है परिस्थिति है भौतिक जगत में। It's a very, very dangerous world, a very insecure world. ये बहुत ही खतरनाक जगह है, ये भौतिक जगत, और बहुत ही इंसिक्योर बोले तो असुरक्षित जगह है। People sometimes talk about job security, you know this phrase? तो कई जगह लोग जॉब की बात करते हैं कि असुरक्षित है, परमानेंट नहीं है। Yeah, well, have any of you ever heard of the Enron scandal in America some years ago, or 10 or 15 years ago? आप में से एनरॉन स्कैंडल करके जो एक घटना हुई थी अमेरिका में। Anyhow, it was a big, I think they were an accounting firm. I don't remember. It was a big business.
Huge business. तो ये कंपनी में एक कुछ घपला हुआ था, तो उसमें बता रहे थे कि ये जो फर्म है वो अकाउंटिंग का फर्म था Employing thousands of people. और बहुत ही बड़ा जो कंपनी था उसके अंदर हजारों लोग काम करते थे And some of those people had been working at the same company for like 20 years or more. और वहाँ तो कितने जन ऐसे भी कर्मचारी थे जो 15-20 सालों से अधिक कार्य कर रहे थे And all of a sudden, boom, finished. और कुछ क्षण में वो कंपनी गिर गई, सब खत्म। All of a sudden, these people had no job. और इतने सारे हजारों लोगों के पास कुछ काम नहीं था। They had mortgages to pay on their houses. और उनके इतने घर का जो लोन लेके रखा है वो सब बनना था। Some families literally became homeless. They went out on the street. They had to live on the street. The whole family. और ऐसे भी हुआ किसी के साथ कि उनके घर गिरवी रखा हुआ था, लोन पर था, तो जैसे ही कंपनी बंद हुई तो वो रास्ते पर आ गई, पूरा परिवार रास्ते में आ गया। In 2008 also. और 2008 में जो आर्थिक गिराव आया था, उसमें भी ऐसी हुआ। Some of you may remember there was a worldwide financial collapse. तो आप लोगों को पता रहेगा कि 2000 में पूरा विश्व व्यापक पूरा जो बाजार पूरा गिर गया। A lot of people with job security suddenly had no job, no money, no place to live. और 2008 में ऐसी परिस्थिति हुई है कि बहुत बड़े-बड़े बैंक गिर गए थे, तो उसमें बहुत जन की नौकरी चली गई, घर चला गया, पूरे रास्ते में आ गए। बहुत There simply is no security in the material world. तो इसमें आपकी कोई सुरक्षा नहीं है इस भौतिक जगत में। Krishna says in the 8th chapter of Bhagavad Gita, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, this is a world of dukkhalayam ashashvata. ये जो पूरा ये जो जगत है पूरा दुखालय और अशाश्वत है। Dukhalayam means a place of miseries, दुखालय का अर्थ है जो पूरा दुख भरा हुआ है and ashashvata means it's temporary. और अशाश्वत का मतलब है सब चीजें दूर है। So, whatever you want, because everybody wants something material. आपको कुछ भी चाहिए और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ भौतिक जरूरी आवश्यकताएं रहती है। There are two ways to go about it. देखो दो तरीका रहता है इस चीज को ये करने का, डील करने का। One way is you can try for it materially. एक प्रयास रहता है भौतिक तरीके से आप प्रयास करना, By making money or by worshiping demigods. या आप बहुत सारा धन कमा के या तो देवी देवता की उपासना करके। And the other way is by putting your desires before Krishna. और दूसरा तरीका है कि आपकी भौतिक आवश्यकता जरूरत है, आप भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करते हो। Now let's say you try to fulfill your material desires in a material way. और चलो पकड़ लेते हैं कि पहला जो तरीका है आपकी कोई भौतिक इच्छा है और आप वो भौतिक तरीके से आप उसको पूर्ति करने का प्रयास करते हो। So one of three things will happen. या तीन में से कोई एक चीज आपके साथ हो सकती है। Either you won't get your desire fulfilled and you'll be frustrated. और प्रथम तो ये है कि आपका इच्छा पूरा ना हो, ऐसा संभावना है, और आप इससे बहुत ही परेशान हो जाएंगे। Or you will get your desire fulfilled and you'll still be frustrated. और दूसरा ये है कि आपकी इच्छा की पूर्ति भी हो जाओगे, फिर भी आप असंतुष्ट नहीं होगे, परेशान रहोगे। Because it's not as fantastic as you thought it was going to be. पर आपको लगा था बहुत आनंदमय रहेगा आपकी इच्छा की पूर्ति, पर वो ऐसा होता नहीं है। What's the third one that Kadil told us? Third thing that can happen. Anyhow, at least those two possibilities. If you try to fulfill your desires materially. तो ये दो संभावना हो सकती है जब भी आप भौतिक इच्छाओं को भौतिक तरीके से आप पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। Any way you look at it, you're going to be frustrated. Guaranteed. तो आप इस तरीके से करोगे तो ये गारंटीड है आप परेशान रहोगे। And the other way, if you approach Krishna to fulfill your material desires. और जो दूसरा तरीका हमने ये चर्चा किए थे ऐसे कि भगवान के समक्ष जाके अपनी भौतिक इच्छाओं को व्यक्त करना। Tivrena bhakti yogena
one of two things also will happen. तो जब भी आप भगवान से बहुत तीव्रता से कुछ चीज की प्रार्थना करते हैं तो यहाँ भी दो चीज की संभावना रहती है। Either Krishna will be so pleased with you that he'll fulfill your material desires. पहला चीज ये हो सकता है कि भगवान आपने इच्छा प्रकट की और भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए और आपकी इच्छाओं को पूरा कर देते। Or by putting your desires before Krishna, you become so advanced that you don't care anymore about your material desires. और ऐसा भी हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आप अपनी इच्छा को प्रकट करने के बाद फिर वो इच्छा नहीं रह जाती है, बोले नहीं होगा तो चलेगा। Either way you win. तो बोले कि दोनों तरीके में से आपकी जीत हो गई है। Like with Dhruva Maharaj, both things happened. तो ध्रुव महाराज जी के साथ में यही चीज हुआ ऐसे। Krishna was so pleased with Dhruva Maharaj that he was willing to give him great benediction. तो ध्रुव महाराज जी से उनके तपस्या से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वो तैयार हो गए, जो चीज चाहिए ध्रुव आप मांग लो ऐसे। But by that time, Dhruva Maharaj had become so advanced he didn't care anymore. पर साथ में जो भगवान का उन्होंने तपस्या किया, भक्ति किया, साथ में उनकी जो इच्छा है ना वो भी समाप्त हो गया और उनको कोई परवाह नहीं था उनकी इच्छा पूरी हो या ना हो। What's that verse? Swamin Pitar Kosmi Pradhan Yache. How does it start? कांचम विच्छन्न तव दिव्य रस। I was looking out for it. Yeah, but what's the first name? Stane Vilasita. Huh? Stana Vilasita. Stana Vilasita Vasisti Dohan. Twan Praktavan Deva Munindra Guyam. Kachan Kachinvan Abhidivyaratnam. Swamin Pitar Kosmi Pradhan Yache. He said he wanted to get, he was upset. तो सभी वो तपस्या से पहले वो बहुत ही निराश थे ऐसे। And he wanted to get a kingdom bigger than his grandfather's. और उनका कभी अभिलाषा क्या था कि उनको ऐसा साम्राज्य चाहिए जो उनके दादा है उनसे भी बड़ा चाहिए। Which was a little difficult because his grandfather was Lord Brahma. पर उनके दादा से बड़ा साम्राज्य चाहिए, पर समझ ये है उनका जो दादा है वो ब्रह्मा जी है, उनसे बड़ा साम्राज्य चाहिए। So he said, start again. First. Stanavilasi Tamasisti Brahma. He said, I was performing great austerities, searching after broken pieces of glass. बोले कि मैंने तपस्या करने के बाद बोलते हैं कि मैंने इतना तपस्या किया और तपस्या का उद्देश्य क्या था, कांच के टुकड़े के लिए किया था। Bhaktavan Deva Munindra Guyam. That now I've gotten just a minute. Bhaktavan Deva Munindra Guyam. I've gotten that which even the demigods don't get. और मुझे अब ऐसी चीज जो प्राप्त हुआ जो देवी देवता ये जो स्वर्ग के राजा है इंद्र उसको भी वो प्राप्त नहीं हुआ है। And the sages don't get. और इतने बड़े जो ऋषि मुनि हैं उन लोगों को भी ये सब चीज प्राप्त नहीं हुआ है। Deva Munindra Guyam. Indra, the kings don't get. तो देव मुनि इंद्र इन लोगों को भी जो चीज जो दुर्लभ है वो चीज मुझे प्राप्त हो गई है। Gachan Vachinvan Abhidivyaratnam. Now I've gotten the most valuable jewel. बोले कि मैं कांच के टुकड़े के लिए आया था और मुझे तो असल में हीरा मिल गया मुझे। Swamin Kritarkosmi Vadanna Yache. But now I don't care anymore. और मेरे अंदर वैसी भौतिक आशा थी पर अब मेरे अंदर वो सारी आशा नष्ट हो गई। So if we put our material desires before Krishna, we win. One way or another, you win. तो देखो तो जो दूसरा तरीका है तो आप भगवान के समक्ष में आप अपनी भौतिक इच्छाओं को रखते हो तो आपके साथ दो चीज हो सकता है जैसे महाराज जी ने बोला तो दोनों चीज में आपकी विजय है। You can't lose. तो आपकी हार होगी नहीं भगवान श्री कृष्ण के पास जब आप प्रार्थना करते हैं। By surrendering to Krishna, you can't lose. अगर आप भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उनका शरण को स्वीकार करते हो आपकी हार कभी भी नहीं होगी। But trying to fulfill your material desires in a material way, you can't win. तो आपकी अगर आप भौतिक इच्छा है और भौतिक तरीके से आप अपनी इच्छा को पूरा करोगे आपकी संसार में कभी भी विजय नहीं होगी। You know the expression, the cards are stacked against you. Like in gambling, cards, playing cards, they're stacked against you. In other words, the dealer already does everything in his favor. You can't win. तो जैसे जो ताश के पत्ते खेलते हैं जो बाहर जो कैसीनो में जो पत्ते खेलते हैं
तो वहाँ के जो मुख्य व्यक्ति रहता है वो इस तरह से वो कार्ड्स को रखा हुआ रहता है ना, वो आपका हार निश्चित ही रहता है कि वो कमाने के लिए ही बैठा है आपको आपसे पैसा लेने। तो इस भौतिक जगत में भी आपका हार निश्चित है। It's already predestined. You can't win. तो पूरी तरीके से किया हुआ है, आपको हारना ही है। Like in Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. You know Las Vegas, Nevada? You don't know Las Vegas. It's kind of casino. City. A city where there's a lot of casinos. Okay, एक जो शहर See, है this is a real Vaishnav, you know. तो एक शहर है जो माना जाता है बहुत सारे उसमें कैसीनो है जहाँ ऐसे जुआ और इत्यादि जो चीज खेला जाता है। But why are these casinos so big and they get so much money? It's so opulent. तो हमने देखा कैसीनो या बहुत दिनों ने देखा होगा, तो आप देखे होंगे कि इन लोगों के पास इतने सारे पैसा है और इतना भौतिक तरीके से कैसे उसको खड़ा किए। Because all these people are coming to gamble, but what's called the house, it means the management, they're also gambling. तो कि जो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पैसा लगाते हैं, जो उसका मालिक रहता है वो भी उसमें पैसा लगाता है अभिलाषा से। But there's a saying, the house always wins. The house always wins. It means the casino always wins. तो इसमें ऐसा ये चीज निश्चित चीज है कि जो मालिक रहता है, जो उस चीज को ऑर्गेनाइज करता है, वो हमेशा जीतता है। There's no hope. तो इसमें कोई आशा नहीं रहता है दूसरे वक्त। In material life, there's no hope. तो जो भौतिक जो जगत में है ना, हमारा कोई ऐसे आशा नहीं। In 1968, Srila Prabhupada was speaking on the anniversary of the disappearance of his Guru Maharaj. और एक श्रीला प्रभुपाद जी 1968 में अपने गुरु महाराज के वार्षिक तिथि पे कह रहे थे। And at the end of the lecture, he was talking about how people in the material world are always evaluating, this is good, that's bad. तो बता रहे थे कि ये भौतिक जगत में हर कोई हर चीज का निरीक्षण करते रहता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। He said, you don't need to evaluate, this is good and that's bad. तो बोले कि इस संसार में कोई भी चीज को आपको इतने निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है। He said, it's all bad. निरीक्षण करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये बता रहे हैं कि सब चीज खराब ही है। He said it 2 or 3 times. बोले ये 2-3 बार उन्होंने कहा है। So that makes things very simple. तो इससे काफी चीज सरल हो जाती है। Prabhupada just dismissed the whole material world. Gone. और प्रभु जी श्रीला प्रभुपाद जी अपने सरल शब्दों में पूरे जो भौतिक जगत का जो देखा जो है वो सब क्षण में ही ऐसे बाजू में कर देते हैं। That makes it simple. You can just focus on Krishna consciousness. और आपके लिए बहुत सरल बना देता है। ठीक है, ये सब आपके लिए हमें आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने केंद्र को रखना चाहिए, ध्यान को। Okay, any questions or realizations? आप ऐसी किसी का कोई प्रश्न है या कोई अनुभूति है? Jagannath Baladev Lady Subhadra ki किसी का कोई प्रश्न है और महाराज जी से कुछ पूछना है ऐसे? Prabhuji is asking that they want to know about you, about your association with Srila Prabhupada. Jagannath Baladev Lady Subhadra. Well, you see, as we know, Krishna is very intelligent. He's the most intelligent. And therefore, he protected Srila Prabhupada by keeping me far away from him. महाराज जी से थोड़ा सा दूर रहकर ऐसे श्रीला प्रभुपाद जी का संरक्षण किया। ऐसे महाराज जी दाहिना भाव से बोले। I had very little contact with Prabhupada. बोले कि मेरा इतना श्रीला प्रभुपाद जी के साथ आत्मीयता नहीं करता, उठना बैठना नहीं करता। My contact with Srila Prabhupada was through his disciples
और मेरा जो जितने भी संबंध था शिला प्रभुपाद जी के, वो शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य है उनके साथ उनका संबंध होता था। And through reading his books और शिला प्रभुपाद जी के जो पुस्तक है उनको पढ़ के उनका अच्छा संबंध है। and going on Sankirtan. और संकीर्तन में जाके और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाके। Well, not just book distribution, also chanting. Sankirtan, see these days devotees think Sankirtan means book distribution. It doesn't mean just book distribution. It means public chanting and book distribution. तो साधारणतः संकीर्तन का करने पर बोलने का अर्थ ये होता है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं ऐसे बोल पड़ा। तो पहले की बता रहे हैं कि संकीर्तन का अर्थ ये है कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हो, साथ में भगवान का नाम लेके नगर संकीर्तन करते हैं, वो भी संकीर्तन में ही सम्मिलित है। Who here has read Srila Prabhupada Lilamrita? Raise your hand. आप में से कितने जन हैं श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत पढ़े हैं? Not very many. This is not raised hand. This is stupid. Okay, so when you read about the early days of Iskcon in New York City, आप जब भी इस्कॉन की शुरुआत की दिनों के बारे में आप पढ़ते हैं न्यूयॉर्क सिटी के विषय में, शहर के बारे में, and the devotees like intimate association with Srila Prabhupada. और श्रील प्रभुपाद के साथ जो उनके जो आंतरिक संबंध थे, Like Prabhupada used to cook for them. और श्रील प्रभुपाद जी स्वयं अपने शिष्यों के लिए भोजन बनाते थे। Then he would line them up in rows, and Srila Prabhupada himself would come down the rows and distribute the prasadam. और श्रील प्रभुपाद जी स्वयं बनाते थे भोजन और सबको लाइन से बिठाते थे और स्वयं भोजन को परोसते थे सबके लिए। Anybody could go up to Srila Prabhupada's apartment at any time and ask him anything. और श्रील प्रभुपाद जी के कमरे में कोई भी जा सकता था, कुछ भी चीज पूछ सकता था। Srila Prabhupada would give them advice, like health advice. और श्रील प्रभुपाद जी कभी-कभी उनके स्वास्थ्य के विषय में उनको सलाह देते थे। They had all kinds of questions, and Prabhupada was out always answering every question. और शिष्य के पास अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे। प्रभुपाद जी सबका प्रश्न का उत्तर देते थे। It was so intimate, like the father in a family. They're just in this little tiny room about the size of this room. Prabhupada's there with a few disciples. तो मतलब उस समय में जगह तो बहुत छोटा था, जिस तरह से हमारा ये रूम है, इस तरह से था ऐसे। पर जो आत्मीयता था ना, जैसे जो पिता और पुत्र का जो होता है आत्मीयता, नजदीकीपन, उस प्रकार का संबंध था श्रील प्रभुपाद जी के उनके शिष्य के साथ। So when you hear about that, be honest. Don't you become a little bit envious? तो जब भी आप इस प्रकार का श्रील प्रभुपाद जी का उनके शिष्य के साथ इतना आत्मीयता था, तो कभी-कभी आपको ऐसा नहीं लगता है, ईर्ष्या नहीं होता है ऐसे कि हमें ये प्राप्त नहीं हुआ है? I wish I had been there at that time. Don't you think like that? तो ऐसे लोग महाराज जी बोलते हैं, मैं तो ऐसे विचार करता हूँ, काश मैं भी उस रूम में प्रभुपाद जी के साथ रह पाता, वैसे संबंध स्थापित कर पाता। But you see, intimacy with Srila Prabhupada is not just by physical proximity. तो ऐसा नहीं है कि जब भी हम बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के साथ नजदीकता, तो ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से आप ऐसे आमने-सामने रहना। You can have exactly the same kind of intimate relationship with Srila Prabhupada now. और भले आप समय से हम बहुत अभी आगे हैं, पर फिर भी वही आत्मीयता श्रील प्रभुपाद जी के साथ अभी भी हम स्थापित कर सकते हैं। Just by studying his books and distributing his books. और हम अपने जो श्रील प्रभुपाद जी के बुक को पढ़ के बारंबार पढ़ के हम उन चीज को कर सकते हैं। Guaranteed, you will feel an intimate relationship with Srila Prabhupada. बोला ये निश्चित है, गारंटेड चीज है, आपको श्रील प्रभुपाद जी के साथ आत्मीयता का अनुभव होगा। That's the main thrust of this movement, the main thing that this movement does. और ये जो हमारे जो मूवमेंट है, हमारा जो संस्था है, ये सार वस्तु है। After all, our institution is called a movement. और हमारे जो पूरा संस्था है, इसको अंग्रेजी में मूवमेंट बोला जाता है। That means it moves. और इंग्लिश में जब मूवमेंट बोला जाता है, तो जो हमेशा आगे बढ़ते रहता है, चलते रहता है। And it doesn't mean moving up and down. तो इसका मतलब नहीं है, मूवमेंट का मतलब ये नहीं है खाली ऊपर नीचे From side to side. आसपास में जाना।
means moving forward. और मूविंग का मतलब है आगे चलना, मतलब आगे बढ़ते रहना। Sometimes devotees move from one temple to another temple. कोई भक्त है कभी एक मंदिर से संतुष्ट हो गए, इस मंदिर से दूसरे मंदिर जाते हैं। But that's not the movement we're talking about. तो उस प्रकार की आगे बढ़ने की बात नहीं बोल रहे हैं। We're talking about moving Krishna consciousness forward into society. तो हम जब भी बताते हैं कि आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का अर्थ है कि भक्ति में आप आगे की ओर बढ़े। And in order to do that, we need to have Krishna's potency. और ये सब चीज करने के लिए हम भगवान की शक्ति चाहिए हमें। And you get that especially from studying his books. और ये सब चीज हमें भगवान की जो ग्रंथ है इससे पढ़ के हमें प्राप्त होती है। As one devotee said, don't hide behind your service. और ऐसे लोग कहते हैं कि आप अपनी सेवा के पीछे मत छुपिए। I'm too busy, I don't have time to read. ऐसा नहीं, भक्त कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी सेवा है, मैं ग्रंथ को नहीं पढ़ सकता हूँ। I'm already doing so much service, I'm serving the temple like this and like this. और इस प्रकार की क्रिया करते हैं, अरे मेरे पास तो इतना सेवा है, तो क्या सेवा करते हो, मेरे पास मंदिर का ये सेवा है, घर का ये सेवा है। But every devotee has to take time to study Prabhupada's books. और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सब थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर श्रील प्रभुपाद की बुक पढ़ें। You see, we're materially conditioned. हम भौतिक दृष्टिकोण से बद्ध हैं। And there are 4 defects of a materially conditioned soul. और ये जो भी 4 कमियां हैं ऐसे बद्ध जीवों में। Who knows what those are? आप में से कितने जन हैं जिनको ये 4 जो कमियां हैं बद्ध जीव में वो पता है? Name one defect. One. Imperfect senses. Okay, imperfect senses. Imperfect senses मतलब हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। Okay, what's another one? Huh? To cheat others. Propensity. To cheat others. Yeah, the propensity to cheat. हाँ, मतलब कि दूसरों को छलने की प्रवृत्ति है हमारे में। That's the biggest one. That's the biggest one. ये सबसे बड़ा हमारे अंदर दोष है। What are the other 2? Illusion. What? Short memory. Forgetting. What's that? मतलब कि is telling that we have a short memory. No, that's not one. Huh? To be illusion, easily illusion. Yeah. हम भ्रम में जल्दी से आ जाते हैं। And what did he say? What's he saying? He's also telling the incomplete sense, मतलब imperfect senses. Yeah, imperfect senses. Yeah. Imperfect senses. I don't think someone said that, did they? Tendency to do mistakes. Huh? Tendency to make mistakes. Yeah. Okay, so 4 defects. तो गलती करने की प्रवृत्ति, ये And 4 दोष हैं। we're conditioned. We're trained right from when you get out of the womb. You're trained with these 4 defects. वो और ये चीज है कि आप जब भी ऐसे माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो ये 4 कमियां आपके अंदर प्रशिक्षित किया जाता है। And the only way to change that is by changing our consciousness. और ये 4 चीज को सुधारने का यही है कि हम अपने चेतना को सुधारें। And the only way to do that is by changing what is going into our consciousness, our intelligence. और इस चीज को बदला कैसे जा सकता है, चेतना को कैसे बदला जा सकता है कि चेतना के अंदर जो चीज हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है ना, वो चीज को बदल के हम अपने चेतना को बदल सकते हैं। Therefore, we must, if we're serious about Krishna consciousness, we must study Srila Prabhupada's books. बोलेंगे अगर हम श्री कृष्ण भावनामृत को अगर गंभीरता से लेते हैं तो हमें श्रील प्रभुपाद जी के बुक को गंभीरता से लेना पड़ेगा। And there's a lot to study. और ऐसे पढ़ने के लिए बहुत चीज है प्रभुपाद जी की। If you study one verse and purport of Bhagavad Gita every day, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक या उसका पूरा तात्पर्य के साथ पढ़ते हैं, in 2 years you'll read the whole Bhagavad Gita. और 2 साल के अंदर आप पूरा भगवद गीता पूरा कर सकते हैं। In the Srimad Bhagavatam, there are 18,000 verses. और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। If you read one verse and purport every day, अगर आप प्रत्येक दिवस भागवतम का एक श्लोक और वो पूरे तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे, it'll take you 50 years. और ये आपको 50 साल लगेगा। Good luck.
आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी यात्रा की। So we need to start now, and we need to get serious. और इसलिए पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत चीज है, हमें तुरंत ही इस चीज की शुरुआत करना है और हमें बहुत गंभीरता से लेना You है। have to consider very carefully, what are your priorities in life? तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपके जीवन में प्रधानता क्या है And what kind of life do you want for your children? और आपको किस प्रकार का जीवन आपके अपने बच्चों को देना है, आने वाली पीढ़ी को। That's really important. Those of you who are parents, what kind of life do you want for your children? बोले कि विशेष करके जो माता पिता है उसको ये गंभीरता से विचार करना चाहिए, आप अपने बच्चों के लिए किस प्रकार का जीवन उनको देना चाहते हैं What kind of values do you want them to have? और आप अपने बच्चों को जीवन का कौन सा मूल्य को देना चाहते हैं आप। Because they aren't going to get the right values from outside society. It's just not available. और जो सही चीज है जीवन का मूल्य वो आप समाज उनको ये सब चीज कभी भी नहीं सिखाएगा। One time in London, in the temple room, we were sitting and having prasadam. एक बार लंदन में और सब वक्त ऐसे प्रसादम रूप में बैठे थे। And I was sitting right next to a devotee whose wife was sitting on the other side of the room, very obviously about 8 months pregnant. तो महाराज जी ऐसे एक भक्त के बाजू में बैठे थे, उनके एकदम ही ऑपोजिट में एक माता जी बैठी थी जो 8वें माह से गर्भित थी। And I asked him, I know here in India now it's illegal to try to find out the gender of the baby, right? तो बोले कि मेरे को पता नहीं है कि यहाँ कैसा है कि यहाँ जो बच्चे का लिंग देखना कि लड़की है या लड़का, यहाँ इस चीज को लीगल है कि कानूनी है या गैर कानूनी But है। in England, as far as I know, it's still legal. हाँ, ये- As far as I know, in England, it's still legal. हाँ, तो ये जो इंग्लैंड में है तो वहाँ ये चीज को एक कानूनी है, आप देख सकते हैं, लिंग देख सकते हैं। So I asked him, do you know, is the baby going to be a girl or a boy? तो महाराज जी ने उत्सुकता से पूछा, आपको आपने क्या इसका परीक्षण किया है कि जो गर्भ में जो बच्चा है वो स्त्री है या पुरुष है? He said the sonogram said boy. तो बोले कि सोनोग्राफी किया हुआ है तो वो बता रहे हैं कि लड़का होने वाला। And so I said, okay, so have you thought about how you're going to train your son? तो फिर महाराज जी ने फिर अपना शुरू किया, बोले कि ठीक है आपने ये जान लिया, फिर आपने कोई ऐसे कोई योजना बनाई कि आप उसको कैसे शिक्षित करने वाले हैं। Now this was an initiated devotee. और जिससे बात कर रहे थे महाराज जी वो एक दीक्षित भक्त थे। Very serious, very strict devotee. और बहुत ही गंभीर और बहुत ही दृढ़ भक्त थे। He said, yes, I thought about it a lot. बोला कि हाँ इस चीज के ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह से विचार किया। I said, okay, so how are you going to train your son? तो आप किस तरह से प्रशिक्षण देने वाले हैं उसे? He said, I'm going to train him to be a businessman. और उन्होंने कहा कि मैं उसको एक व्यापारी कैसे बनता है उसका उसको प्रशिक्षण दूंगा, बिजनेसमैन बनने का प्रशिक्षण। And I didn't know what to say. I just ate my prasad. महाराज जी ये सुन के बहुत अवगत रह गए और बोले कि तो कुछ बोला नहीं, मेरे को समझ भी नहीं है इसको बोलो क्या, और मैं अपना प्रसाद लेने लग गया। Like there's a shortage of businessmen in the world. तो बोले कि इस तरह से बोल रहे कि मेरे को इसे बिजनेसमैन बनाना है कि जैसे संसार में आकल पड़ गया, ऐसे कोई व्यापार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए मेरे को विशेष इस चीज के ऊपर ध्यान देना। The dire need in society is more businessmen. तो उनके लिए ऐसा है कि ये सबसे बड़ा समाज में जरूरत है कि कोई बिजनेसमैन है। What we need is more sadhus. We need more preachers. तो हमें ये समझना होगा, हमें साधु चाहिए, प्रचारक चाहिए इस समाज में। So you have to think what kind of values you're going to give your children. How are you going to teach them? तो आप किस प्रकार का उसे जीवन का मूल्य अपने बच्चों को देना है, ये चीज का विचार करना चाहिए माता पिता। What's on your bookshelves? बोले कि आपके जो बुक शेल्फ में आपने क्या रखा है? If they're Prabhupada's books, then your children will grow up to be sadhus. अगर आपके जो कपाट के ऊपर जो भी आपके बुक शेल्फ है वहाँ श्रील प्रभुपाद जी का बुक है तो आपकी जो बच्चा है वो एक साधु बनेगा। Change your own consciousness. Srila Prabhupada ki jai.
Change your own consciousness, change the consciousness of your children. बोला कि आप अपना चेतना को सुधारने का प्रयास करो और बच्चे का चेतना अपने आप सुधर जाए। Srila Prabhupada said, having these books in your home is like having Narayan in your home. Sorry, man? Line out. Prabhupada said, having these books in your home is like having Narayan in your home. तो बोले कि श्रील प्रभुपाद जी के कहते थे कि ऐसे ग्रंथों को घर पे रखना मतलब शेर को घर पे रखना है। Where's our Bhagavatam set? You said there's a Bhagavatam set? Where's the Bhagavatam set? I think it's there. Yeah, well, that's the wrong place for it. You know, in marketing, they say if you want to sell, you have to show. If you want to sell something, who here has a shop? आप में से यहाँ से दुकानदार कौन है? Somebody here is a shopkeeper? Okay. If you want to sell something, where do you put it? You put it in the back room? So the same with our books. You put the books in the back room, how are you going to sell them? ये महाराज जी बताते हैं कि जिसका दुकान है आपको अनुभव होगा कि आपको अगर किसी वस्तु का अगर बिक्री करना है, ग्राहक आप ढूंढ रहे हैं, तो वो सब चीज आपको दुकान में सामने सामने रखना पड़ेगा और जिससे कि वो सामने वाला उस चीज को खरीदेगा। तो आपको जो चीज बेचना है उसको आपको समक्ष रखना पड़ेगा। It's a basic principle of marketing. ये एक मूलभूत सिद्धांत है ये व्यापार का बेचने का। If you want to sell, you have to show. अगर आपको कुछ चीज बेचना है वो आपको समक्ष रखना पड़ेगा। It's common sense. ये साधारण बुद्धि है। So, anyhow, what's happening with the They're Bhagavatam? trying to get it. But it's upstairs somewhere. It's upstairs. Very good place for it. So anybody who sincerely wants a set of Bhagavatams, आप में से अगर कोई एकदम गंभीरता से इसको लेना चाहता है और श्रीमद् भागवतम सेट लेना चाहता है, there's a ladder out here. You can climb the ladder and go up to the roof and get the Bhagavatam set. बोलेंगे आप यहाँ जा सकते हैं, सीढ़ी पकड़िए और ऊपर जाके आप अपना भागवतम ले सकते हैं। And if you don't want to go to that trouble, you're just not very sincere. That's it. अगर आप गंभीर नहीं है तो फिर आप ये सब चीज कष्ट को नहीं उठाएंगे। Okay. Maharaj, top above we have a It's above my head. Okay. Yeah, there is a one shelf. Maharaj, we are a very small temple, so that's the reason we have kept a book display over there. Yeah. Okay. Can everybody see it? Can you see the Bhagavatam? I'm the only one who can't see it. Okay, so anyhow, you should buy these books. और जो भी है आपको ये बुक लेना चाहिए। Now, let's see. Now, you might say, some of you might say, well, I already have all the books. स्वाभाविक है, कभी-कभी ऐसे किसी को देखने जाते तो बोलते हैं हमारे पास तो सब बुक है, सब कुछ है हमारे पास। Right? Or, yeah, I don't have any money. और दूसरा चीज बोलता है मेरे पास तो पैसा नहीं है। Nobody leaves the house without money. बोले कि किसी का घर नहीं है बिना पैसे का। Everybody has money. सबके पास पैसा है। But the question is what you're spending it on. और प्रश्न है कि आप अपना पैसे को किधर खर्चा करते हैं। People waste so much money. They spend so much money on stupid things, unbelievable stupid things. बोले कि लोगों के पास पैसा है और लोग इतने फालतू चीज में खर्चा करते हैं, हम वो चीज का तो कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे पैसे बर्बाद करते हैं। But buying these books, you should consider not as an expense, बोले कि जब हम ये चीज को खरीदते हैं, इसको खर्चा समझना ही नहीं चाहिए, but as an investment. इसको ऐसा समझना चाहिए इन्वेस्टमेंट है ये। An investment in your future and your children's future. और ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक निवेश है आपके स्वयं के हित के लिए, आपके भविष्य के लिए। Some people invest money in stocks काफी जन है जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं or in real estate. और कोई ये सब कर रियल एस्टेट में पैसा निवेश करते हैं। But this is a much better investment. और ये सबसे बड़ा निवेश है ये।
you don't have to invest very much money, and it will last for the rest of your lifetime and your children's lifetime and their children's lifetime. बोले कि आप उसको इसमें एक बार आपको निवेश करना पड़ेगा, फिर उसका जो फल है आप उसको भोग सकते हो पूरा जीवन भर, फिर उसके बाद आपके जो बच्चे हैं उनके बच्चे, सब इस चीज का लाभ उठाएंगे। And the knowledge you get in these books, what's that? And the knowledge that you get in these books is worth far more than what you spend for them. बोले कि इसके अंदर जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है ना, जितना मूल्य देते उससे कई कई हजारों गुना उससे ज्यादा का ज्ञान प्राप्त होता है। We have a full set of Bhagavats. Yes, आप हमारे पास full set of Who's in charge of the books? Huh? You're in charge? Yeah, so yeah, he's also taking care. We, Maharaj, we just want to tell you that we have a big mall over there, big shopping center, and that mall owner has assigned one permanent place for book distribution. Yeah, Fantastic. so today is the Sunday, and many people, thousands of people gather over there, and devotees stand over there and distributing books over there. So currently, Nandi Bandhu Prabhu is one of the senior devotees of this temple. So he took the in charge of doing this thing, and right now he's there in. Okay. Very good. And in his absence, he takes care of it. But you're taking care of the books? Yeah. Okay, so you have a full set of Bhagavatams here, right? Okay. What's the cost of a full set of Bhagavatams? So today, Maharaj, we have the list. So there are different languages, they have a different price. Okay. 5,000. Hindi is the common language over here, and 5,000 they can get the. For 5,000 rupees, you can get a whole set of Bhagavatams? Yeah. Now, still the Bhadra Purnima discount is still going on. What's that? Yeah. Bhadra Purnima marathon. Oh, Yeah. okay. Okay, I understand. For 5,000 rupees, you're making an investment in your future, your children's future, your grandchildren's future. 5,000 rupees, it's nothing. तो बोले कि आप 5,000 रुपए में आप ऐसा निवेश करते हैं जो आपको लाभ पहुंचेगा, आपके बच्चों सबको लाभ पहुंचेगा ऐसे। And Marathi, how much? Yeah, Marathi. Maharaj, actual rate is 7,400. Okay, for those who speak Marathi, if you learn Hindi, you save money. बोले कि क्योंकि हिंदी का मूल्य कम है, तो हिंदी का मराठी का मूल्य ज्यादा है, तो अगर आप मराठी की जगह अगर हिंदी अगर ये कर लें तो आपको ज्यादा सस्ते में आपको ये डील पड़ जाएगा। Yeah, you have English also? Yeah. How much is the English one? English is 8,900. Okay, don't learn English. इंग्लिश सबसे महंगा है, तो इंग्लिश पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। Okay, so anyhow, and of course we have so many other books like Bhagavad Gita as it is. और हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है। In India, if you talk to people about Bhagavad Gita, they'll say, yes, I know Bhagavad Gita. तो आप भारत में ये भी बोले ना भगवद गीता, आपको सब बोलेंगे ऐसे प्रति हमें सब पता है भगवद गीता के विषय में। From my very childhood, I was hearing Bhagavad Gita. हम तो बचपन से ये सब चीज सुनते आ रहे हैं। No, you weren't. बोले नहीं, आप नहीं। You were hearing something bogus. बोले आप जो भी चीज दे रहे हैं ये फालतू चीज आप सुनते आ रहे हैं। It's an impersonalist interpretation of Krishna's book. और तो उसके अंदर impersonal जैसे निराकारवाद और वो सब चीज का आपका अनुभव है। Therefore, there's a saying. Therefore, it's important that people get Bhagavad Gita as it is. इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी लोगों को श्रीमद् भगवद गीता यथारूप प्राप्त करना बहुत जरूरी है। It's important for you to get Bhagavad Gita as it is and read it every day. लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये भगवद गीता रोज प्रतिदिवस पढ़ना। You can't say you're too busy. आप नहीं बोल सकते कि आप बहुत बिजी हैं। It probably takes about 5 minutes to read one verse in purport of Bhagavad Gita every day. और
प्राय आपको सिर्फ 5 मिनट लगता है एक श्लोक और उसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने में। So what we're going to do now is we're going to sell books. अभी क्या करेंगे हम जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। And we need 2 devotees to be up here. One to take the money that people give, and one to keep the score of how many of each title is sold. तो महाराज जी बता रहे कि हमें 2 भक्त चाहिए, एक भक्त है जो धनराशि देंगे और एक भक्त है उसका अकाउंटिंग करेंगे। Okay, who's gonna take the money? He's a CA person. What's your name? Ram Leela Das. What? His name is Ram Leela Das. Ram Leela Das. Okay, Ram Leela Prabhu is gonna take the money. और जो राम लीला प्रभु है ये सबसे आपसे धनराशि लेंगे। Do we trust him with the money? क्या आप इसके ऊपर भरोसा करते हैं इसके आप जो पैसा दोगे? Now, here's a secret. बोले इसमें एक रहस्य है। I recommend you give Ram Leela Prabhu all your money. और मैं एक सुझाव देता हूँ, आप राम लीला प्रभु को आप पूरा अपना धन दीजिए। And you get benefit in 2 ways. और आपको इससे 2 तरीके से आपको लाभ पहुँचते हैं। One way is you get, how do you say, the highest transcendental knowledge. आपको एकदम उच्च कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। And the other way you benefit is that you don't have any money left for sense gratification. और इससे और दूसरा लाभ ये पहुँचेगा, आप पूरा पैसा दे दोगे इधर, तो आपको भौतिक चीजों के इंद्रिय तृप्ति के लिए पैसा खर्च करने के लिए रहेगी, बर्बादी करने के लिए रहेगी। So now when you take the money, where are you going to put it? आप अगर पैसा नहीं तो कहाँ लगेंगे? Now most of them transfer it by online. Okay, fine. But what about the ones who have cash? Where's he going to put the money? आपके पास कैश नहीं है तो Huh? आप कहाँ डालोगे पैसा, कहाँ डालोगे? Huh? Okay, it sounds a little shady to me, but it's okay. सुन के थोड़ा सा ऐसा ये लग रहा है कि पैसा आपकी जेब में जा रहा है। Okay, and you're going to keep the scores? आपको रखेंगे। How are you going to keep the scores? What are you going to write on? आप कैसे स्कोर करेंगे? Okay, fine. Okay, so you 2 stand up here. आप दो यहाँ करेंगे। Okay, now, at the same time, but while you're coming up and buying books, while you're coming up here buying books, also, I'm going to be distributing some fruit. What kind of fruit do we have? Oh yeah, apples. आपका thesis क्या? Is that far away, or are they going to bring it? And requesting down at the Raj to the house. तो अभी इस प्रकार की क्रिया होने वाली है। महाराज जी यहाँ बैठेंगे, जिनको भी यहाँ से जो बुक है कृपा करके जो बुक समक्ष है वही आप दीजिए। आप दूसरा कोई ऐसा डिमांड कीजिए जो सामने नहीं है, जो हमारे लाभ हो सकती है। और ये चीज है, आप आइए इधर दामोदर का दीप भी अर्पण किया जाएगा, तो फटाफट प्रभु जी का एक तरफ रहेगा, माता जी का एक तरफ रहेगा, और एक एक करके हम आ सकते हैं। महाराज जी के हस्तकमल से महाराज जी के द्वारा आप प्रसाद ले सकते हैं। और And जो who's going भक्त to है sing? Who's going to sing Damodar Rasa? दामोदर अष्टकम आप में से कौन गाने वाले हैं? You sing. सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु। You have a clear cut reader? हाँ, ये अभी नवी किस्म में कर now he sings that song. Nobody knows how to sing Damodar Rasa? Yes, Prabhu. Yes. Okay. What's his name? नाम ले लाता। Huh? No. The lawyer. Huh? कार्तिक खंडेलवाल। Kartika, you can lead Damodar Rasa? Okay, you lead Damodar Rasa. हाँ, Okay. कार्तिक प्रभु आप हैं। So, and listen, tell them I'm going to need a pitcher of water and a bowl to wash my hands after before I start signing books. We need Oh, to one other wash thing. his No, two hands other things. after. Okay. Pitcher and some plate. Okay, everybody be quiet, please.
Wait. To wash his hands. Yeah, two other Picture things. and What was I gonna say? before. Yes. Anyhow, one thing is that I appreciate that some of you think I'm a sadhu. बोला कि मुझे My wife is बोला कि मुझे प्रसन्नता है कि कितने जन मुझे साधु समझते हैं But please don't try to touch my feet. बोले कि कृपा करके आप मेरा चरण स्पर्श करने ना आए Because when a person touches your feet, you take on the karma, that person's karma. तो जैसे भी कोई व्यक्ति अगर आपका चरण स्पर्श करता है ना तो जो जिसका चरण स्पर्श करता है उसको सारे उसके कर्म के जो बंधन है वो लेना पड़ता है And I don't know if I want your karma. No, it's okay. और ये चीज का ये नहीं कि मेरे को आपका सारे कर्म मुझे लेना है I have enough problems already. मेरे पास व्यक्तिगत जीवन में इतने समस्या आपका समस्या नहीं हुई मैं Okay, now there was something else I was going to say. What else did I want to say? Oh yeah, here's an important point. Ladies, please stop talking. माता जी कृपया मेरी बात Uh-huh, सुनें। lady. Okay, here's another important point. That for those who would like me to, I'll sign your book. और आप में से जो चाहते हैं कि बुनियाद ले और महाराज जी के हस्तकमल से सिग्नेचर करें And if you want to buy a set of books that we don't have here, you can make an arrangement to get the books later, and I'll sign them later. अगर कुछ कुछ चीजें जो आपको चाहिए यहाँ से पर यहाँ उपलब्ध नहीं है आप यहाँ ऑर्डर कर दीजिए और हम वो चीज को महाराज जी के हस्तकमल में साइन करके आपको वो चीज डिलीवर कर देंगे Okay, bolo. दामोदर Namamishwaram Sati Prasadam. Lasakundalam Kule Brajamanam Namamishwaram Satchidanandarupam Vasakundaram Gokule Brajamanam. Let's go. Come on. And water, pani. Let's go. Param Vishwa Macha Koto Ducha Gopya. Param Koda Yugmena Netra Yugmam Rijantam Param Vishwa Yugmena Satankanetram Mahaswadakampa